वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है केपी एजुकेशनल क्लास में। आज हम नेक्स्ट मेजर मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, स्टोन्स। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन बनाई हुई है फ्रेंड्स, प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा। रॉक्स फ्रॉम विच स्टोन्स आर फॉर्म। रॉक्स बेसिकली 3 वेज में डिवाइड होते हैं: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशंस। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है ऑन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक क्लासिफाइड इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 टाइप्स के रॉक्स जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। इग्नियस रॉक पे फ्रेंड्स क्या होता है? कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा होता है। दीज रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा एट अर्थ सरफेसेस। अर्थ सरफेसेस पे जो मोल्टन मैग्मा कूल होता है वो वोल्केनिक रॉक रहता है। वो एक्सट्रीमली फाइन और ग्रीन ग्लॉसी रहेगा। उसमें बसाल्ट और ट्रैप एक बेसिकली एग्जांपल्स है वोल्केनिक रॉक्स के, जो इग्नियस रॉक है। हाइपोबसाल्ट रॉक, कूलिंग ऑफ मैग्मा एट शैलो डेप्थ। इसके एग्जांपल्स है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, डोलेराइट और जिनेसिस। ये फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहते हैं हाइपोबसल्स। प्लूटोनिक रॉक, ये इग्नियस रॉक का थर्ड टाइप है, जो कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ग्रेनाइट और डोलेराइट। नेक्स्ट टाइप है सेडिमेंट्री रॉक। Disintegrated rocks material is carried by flowing water and deposited elsewhere. Year after year, new layers of material are deposited and consolidated under pressure, heat, and chemical action. Hence, these rocks are uniform on fine grain and bedded. Examples है sandstone, mudstone, limestones. Metamorphic rocks are formed after igneous and sedimentary rock undergo changes due to pressure, heat and chemical action. इग्नियस और सेडिमेंट्री पे जब प्रेशर और हीट्स और केमिकल एक्शन अप्लाई होगा फ्रेंड्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर द रॉक्स आर foliated structures. Examples granite becomes genesis. ग्रेनाइट है, ये इग्नियस रॉक है। बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है। बसाल्ट चेंजेस आफ्टर हीट एंड प्रेशर, सिस्ट और लेटराइट में कन्वर्ट होता है बसाल्ट का। लाइमस्टोन और मडस्टोन, ये दोनों है लास्ट वाले एग्जांपल्स। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री, मडस्टोन सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन हो जाता है मार्बल, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और स्लेट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मेटामॉर्फिक का रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, रॉक्स मे बी क्लासिफाइड एज अ स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर। Stratified rocks, they have layered structure: sandstone, limestone, mudstone. Unstratified rocks, they possess crystalline and compact grains: granite, trap, marbles. Foliated structure, they have foliated structure along the planes of foliation and split easily. These planes are not parallel to each other. Chemical classification. Chemically, basically siliceous rocks, argillaceous rock and calcareous rock. Main constituent is silica. The rocks are hard and durable. Example granite, trap and sandstone. These are the siliceous rock. Argillaceous rock, clay is the main constituent. These rocks are brittle. They cannot withstand shock. Slate and laterite are the argillaceous rocks. Calcareous rock, calcium carbonate are main constituent. Examples limestone and marble. Characteristic of good building stone: it should possess fine grain structure, uniform, pleasing color. It should be free from soft patches, flaws and cracks. The minimum strength of
3.5 Newton per mm square is required for stone to use a load bearing walls. It should not be absorb more than 5% water. Specific gravity should not be less than 2.5. In attrition test, it should not show wear of more than 2%. Quarrying. It is a process of extracting stone from rock bed located near the earth's surface and exposed to sun. Quarrying may be done using hand tools, channeling machine, or by blasting. Quarrying used by hand tools. In soft rock, hand tools like chisels, hammer, picks, axes, shovels may be used. Heating techniques is suitable for getting aggregates. Wedging techniques is suitable for quarrying a thin bedded rock. Quarrying using channeling machine. This is suitable for large size quarrying in soft rock like marble and limestone. Channels are 50 to 75 mm wide, 2.5 to 3.6 mm deep. After channeling with machine wedges and drills are used to get a stone. Quarrying by blasting. It consists of boring, charging, tamping and firing. This gas produced in the blast tries to come out by breaking the rocks in all directions and succeed in escaping along with the line of least resistance. Dressing of stones. Dressing of stones. The aim of preliminary dressing is to bring the size of stone approximately to the required size and reduce the transportation cost to great extent. Final dressing as per the requirement of user. The methods of the dressing is hammer face, chisel drafted face, polished face, tool finish. Seasoning of stone. The process of removing sap from pores is known as seasoning. The best method of seasoning is to allow the stone to dry for a period of 6 to 12 months in a shade. Preservation. Preservation of the stone. The following preservatives are used: linseed oils, solution of alum and soap, solution of barium hydroxide, coal tar, paint and paraffin. Test on stone. Field test. Smith's test. It is a check whether the stone contains muddy substance. A sample of stone is kept in a glass of distilled water for 24 hours and stir well to remove muddy substance. Toughness test. Stone is hit with a hammer and metallic sound is indication of strong stone. Hardness test. Most hardness may be found as scratching by the stone with a knife. Laboratory test. Crushing strength test. 40 by 40 by 40 mm cubes are used for testing. Load is applied in a compression testing machine at the rate 14 Newton per mm square per minute. A stone which a crushing strength more than 100 Newton per mm square is treated as good stone. Wearing absorption test. For a good stone, water absorption for 24 hours immersion should not exceed 0.60. Attrition test. Los Angeles abrasion test is conducted to find the resistance of the stone to the surface wear. Los Angeles value recommended are for between mix 30%, for base courses 50%. Laboratory test 4 number. Impact test. Impact testing machine consists of frame with guides. Metal hammer weighing 13.5 to 15 kg falls from height 380 mm. Recommended value for various works are: for wearing coat 30%, for bituminous macadam 35%, for water-bound macadam 40%. Acid test. Sandstone are checked for the presence of
presence of calcium carbonate. Sample of 50 to 100 gram of stone is kept in 1% hydrochloric acid for 7 days. If calcium chloride is present, edges are broken and powder are formed. Common building stones. This first is basalt, second is granite, sandstone and limestone. This is marble, quartzite, laterite and slate. Solid and hollow concrete blocks are known as artificial stones. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.